Welcome students, welcome to my channel CoMPhy. I'm Pratik Madnani. Here on my channel I take classes on coding, maths and physics. This topic is of mathematics, right? For students of grade 9, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है जहाँ पे आज दिस इज अ कंटिन्यूएशन अगेन lecture 1, lecture 2 and lecture 3. All the 3 videos I've made on this. This is lecture 4 of polynomials. Polynomials का फोर्थ लेक्चर है. आई नो मेरे जो टॉपिक के वीडियोस आई मेक बिकम अ बिट लेंदी इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स. 6 7 10 लेक्चर हो जाते हैं कभी कभी बिकॉज आई ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट. The whole motive, you can check any of the videos on the channel. I try to make videos which are less than 20 minutes, जो 20 मिनट के कम के वीडियो है, so that आप सब स्टूडेंट्स फोकस के साथ you people can properly go through the concept and you feel like being focused on a particular topic. ज़्यादा टाइम नहीं देके कम टाइम देके भी you can understand the topic in detail. So today's topic again, as I stated, is polynomials. This is the fourth lecture. We would be learning only two concepts in this. Number one being the division algorithm in polynomials, and next is the remainder theorem. So let's get started with the first concept or the first thing which we would be doing in this video, which is nothing but division algorithm in polynomials. So let's read it out. What does it say? क्या लिखा हुआ है? क्या meaning है इसका? Let's try to understand that out. Let p of x and g of x be two given polynomials such that the degree of p of x is greater than or equal to g of x. On dividing p of x by g of x, let q of x be the quotient and r of x be the remainder. Then in general we can say that dividend is nothing but divisor times quotient plus remainder. So ये बहुत बेसिक सा चीज है, जूनियर क्लास में भी हमने सीखा है. अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. आई वुड बी चूजिंग एनी टू, राइट? एनी टू नंबर से आई एम डिवाइडिंग 32 बाई 5. आई वुड गेट क्वोशंट एज 6 एंड रिमाइंडर एज 2. सो वी यूज्ड टू राइट जो डिविडेंड है that is equal to divisor times quotient 5 times 6, and with that we used to add the remainder out. Same thing, same concept is being applied in algebra or basically polynomials as well. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम division algorithm को verify. There is a question example which I have taken. I'll explain you with that itself. Same thing, हम एक polynomial को दूसरे polynomial से divide करते हैं. क्वोशंट में भी पॉलिनोमियल आता है एंड रिमाइंडर कैन बी एनीथिंग, राइट? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट आउट, राइट? हमें ये समझते हैं क्या रिमाइंडर है, क्या क्वोशंट है, क्या डिवाइजर है एंड क्या डिविडेंड है. सो वी हैव बीन गिवन अ वेरी सिंपल पॉलिनोमियल p ऑफ x लिखा हुआ है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, विच नीड्स टू बी डिवाइडेड बाई x माइनस 2. मैं क्या कर रहा हूं, मैं p ऑफ x को डिवाइड कर रहा हूं g ऑफ x से. तो algebraic division you must have gone through. If you have not, need not worry. I would explain you the same here itself with this example itself. So our question is 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1, which again on dividing with x minus 2. So what will I multiply with x to get 3x to the power 4? I have to multiply nothing but 3x cube, right? This is how we have done. This is how we have explained divisions in junior grades as well. तो 3x cube तो अब एक के साथ नहीं मल्टीप्लाई हो सकता ना, x के साथ हो गया तो -2 के साथ भी होगा. तो आई एम मल्टीप्लाइंग 3x cube, so I'll write 3x cube above and I'll get 3x to the power 4. 3x cube multiplied with -2 would give you -6x cube, right? Simple. Now same subtraction, we would simply subtract, so this and this would cancel out. This would give me what? -4 minus of -6 minus 4 plus 6, which is 2. So plus 2x cube. On subtraction I'll get it, and this quantity comes down as -3x. Again the same thing. What will I multiply, right?
यहाँ पे इसको नीचे नहीं ला सकते थे. I'll tell you why. It's not difficult. Keep it as it is. Let's not bring this down. Right? Right? Always remember, जो polynomial आपको दिया गया है, it has to be arranged in descending order of exponents. Right? यहाँ पे छोटा सा trick है इस सब में. It's not difficult. It's simple division only. So with x, what will I multiply to get 2x cube? 2x square, I guess, right? This 2x square is needed to be multiplied. So a plus 2x square is multiplied. When I multiply a plus 2x square, I would be getting what? A 2x cube and a minus 4x square. Very important to understand. क्यों मैंने वेस्ट किया यहाँ पे आपको समझ में आएगा. Right? So again when I subtract, है ही नहीं, ये तो कैंसिल हो गया. अब एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इन द गिवन एक्सप्रेशन विच वी हैव बीन गिवन पी ऑफ एक्स. आई कैन नॉट फाइंड एक्स स्क्वायर, राइट? आई कैन नॉट सी एक्स स्क्वायर. सो हाउ वुड आई गो अहेड विथ इट? Nothing. When I do not have anything, you can simply consider a plus or a minus, any which way it's the same thing, because जीरो का कोई साइन पे इफेक्ट नहीं होगा. जीरो एक्स स्क्वायर है. अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? जीरो माइनस माइनस फोर, तो ये आ गया प्लस फोर एक्स स्क्वायर इन द below when you bring it down. Now you can bring that minus 3x as well below with this itself. Now what will I multiply with x to get 4x square? A simple 4x. So again आप क्वेश्चन की जगह पे प्लस 4x लिखेंगे. अब 4x तो एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा. 4x would be multiplying with x to give you 4x square, and 4x would be getting multiplied with minus to give you a minus 8x. So 4x square, and again simple, again the same way, minus 3 minus of minus 8, which is minus 3 plus 8, which is equal to plus 5. So 5x, right? And then the last term comes below, which is minus 1. So when I do this, what will I multiply with x to get 5x, which is the first term? Nothing but 5. So I would be multiplying a plus 5, right? To get 5x as per the question. So 5x को multiply किया. अब ये 5x सिर्फ x के साथ multiply नहीं होगा. This 5x needs to be multiplied with minus 2 as well, and you eventually get minus 10. So if you see, this gets cancelled out. Minus 1 minus minus 10 minus 1 plus 10, a plus 9 is your remainder. So let us verify. So this is nothing but my quotient. This is nothing but my divisor, and remainder you saw plus 9, and this whole thing p of x जिसको मैं divide कर रहा हूँ, जिससे हम divide कर रहे हैं, the one which I am dividing, the quantity or the polynomial, is called the dividend. The one with which I am dividing is called the divisor, and eventually you get quotient and remainder for the same. So with that same concept, आप division algorithm verify कर सकते हो. हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना. हमें लेफ्ट हैंड साइड पे डिविडेंड है जो कि दिया ही गया है. सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, चेक करना है कि क्वोशिएंट टाइम्स डिविजर प्लस रिमाइंडर लेफ्ट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं. सो देखते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. हमारा राइट हैंड साइड क्या है? क्वोशिएंट है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. This is what we have got. Along with that, we have got plus 4x plus 5. Plus 4x plus 5. Now this needs to be multiplied with what? The divisor. जिससे divide कर रहे थे. What is the divisor here? X minus 2. So x minus 2 is being multiplied with the same. Right? And with this, I would simply add the remainder, which was 9. So x times this is 3x to the power 4 plus 2x to the power 3 plus 4x to the power 2 plus 5x minus 6x to the power 3 minus 4x to the power 2 minus 8x minus 10 plus 9. So on simplifying, like terms को आप subtract कर देंगे. ये अपने को 3x to the power 4 होगा, plus 2 minus 6 would give you minus 4x cube, plus 4 minus 4 would cancel out, so you would not have an x square term. 5 minus 8 would give you minus 3x, and eventually minus 10 plus 9 would give you minus 1. So is this the quotient? Is this the p of x? Let's see.
पी ऑफ एक्स क्या यही दिया गया था? तो आप देखिए पी ऑफ एक्स बिल्कुल यही दिया गया था, विच वॉज नथिंग बट 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1. So we have been given the p of x or the dividend to the same, and using the division algorithm, I basically proved that the same thing, divisor times quotient plus remainder gives me the dividend. Now they are stating find p of 2. Find p of 2. So ये पिछले लेक्चर के वीडियो में आप अगर जाएंगे ना, if you go through the same, you would be understanding that how to find values. Value substitution was one of the easiest thing. We would simply substitute the value. जो दिया गया है वो substitute कर देंगे input, उसके लिए एक output आएगा, and that is what, that is how we calculated value of a given polynomial, right? So 3 times 2 to the power 4 minus 4 times 2 to the power 3 minus 3 times 2 minus 1. So when I solve it, I'll get 3 times what? 16 minus 4 times 8 minus 6 minus 1. So this is 48 minus 32 minus 6 minus 1. So simplifying further, you would be getting what? 16 minus 6 minus 1. That's nothing but 9. So what did we observe? What are we observing here? We are observing that p of 2 solve करने के बाद एक वैल्यू आया, एंड ये वैल्यू जो है यही रिमाइंडर है. So there's a relation to it, and that is what our next topic for the video is. I hope कोई doubts नहीं है समझने में. With this example, I have simply stated कि division algorithm क्या होता है. How do we find or basically verify division algorithm in polynomials? Going ahead to the next topic, which would be the last topic of this particular lecture. As I keep videos short, as I already stated, I do not make videos which are greater than 20 minutes. So let's focus on the next topic, which is remainder theorem. अब समझते हैं क्या लिखा गया है, क्या कहना चाहते हैं. What do we understand by remainder theorem? तो यहां लिखा गया है let p of x be a polynomial of degree 1. Degree 1 polynomial क्या था? What was degree 1 polynomial? Degree 1 polynomial was nothing but एक ऐसा polynomial, linear polynomial, right? That's what we have done in terms of degree. हमने सीखा है polynomials क्या होता है, क्या नहीं होता है, right? And alpha be any real number such that p of x is divided by x minus alpha, right? तो एक प्रूव आता है जहां पे हम कहते हैं बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम आपको जैसे दिख रहा है कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि p ऑफ x का डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होगा, 1 और मोर. एंड जो अल्फा है, अल्फा एक ऐसा कुछ भी एक रियल नंबर है. तो जब मैं p ऑफ x को डिवाइड करूंगा x माइनस अल्फा से, तो जो रिमाइंडर आएगा आपको डायरेक्टली, और रिमाइंडर लाइक यू डू नॉट हैव टू यूज डिवीजन. You can simply say that the remainder is nothing but, remainder would be nothing but p of alpha. That's it. Now there's a proof to it, which you need to understand, and then I'll solve two questions on the same. Right? तो देखिए क्या है, as per given statement, we have been given p of x be a polynomial or of degree 1 or more. Polynomial linear हो सकता, constant नहीं हो सकता, linear हो सकता है, quadratic हो सकता है, all these things it can happen, right? And we are dividing it by x minus alpha. तो हमने अभी क्या सीखा? हमने एज पर डिवीजन एल्गोरिथम सीखा कि p ऑफ x जो होता है वो क्वोशिएंट टाइम डिवाइजर होगा एंड उसके साथ रिमाइंडर ऐड होगा. दिस इज व्हाट वी हैव डन. अब आप अच्छे से समझिए, p ऑफ x को आई एम नॉट चेंजिंग, बट मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही कह दिया है. मैंने कहा है कि p ऑफ x को मैं x माइनस अल्फा से, x माइनस अल्फा, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम डिवाइडिंग, राइट? So divisor I already know, and obviously a quotient आएगा which would be simply q of x. Very easy to understand, right? And p of x would be this plus the remainder, right? I don't think there should be any doubt. Now what I need to do is, if I have been given, and this is the expression that polynomial, not polynomial, like the dividend is equal to quotient times the divisor plus the remainder, right? अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं p of alpha निकाल रहा हूं. देखते हैं मैं p of alpha जब निकालता हूं तो क्या होगा. p of alpha माने क्या? Very simple, that in place of x's I have to substitute alpha. That's how we find value of a polynomial.
You can check the previous video if you have not understood the concept. तो मैं बस x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, मैंने अल्फा सब्स्टिट्यूट किया. अब राइट हैंड साइड में भी सेम सब्स्टिट्यूट करूंगा, q ऑफ अल्फा हो जाएगा, x की जगह पे अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा एंड रिमाइंडर आ जाएगा. तो देखिए ये तो जीरो हो गया ना, दिस गिव्स मी जीरो. So logically speaking, if I'm trying to explain you this out here, what I mean P of alpha is nothing but Q of alpha times zero plus remainder. तो देखिए ये quantity तो zero हो गया. Anything multiplied with zero is zero, no? So with that concept, I can say P of alpha is nothing but remainder. So अगर एक polynomial है जिसका डिग्री एक या एक से ज्यादा है, if the degree is greater than 1 or equal to 1, and I'm dividing it with x minus alpha, wherein alpha is a real number, then I can directly say that P of alpha is nothing but the remainder. Clear? So let's try to understand this out with a question. ये था proof. This is nothing but the proof of remainder theorem. In case you have not understood, that is totally fine. We obviously do not understand things. मैं खुद अभी भी जब कुछ नई चीज सीखता हूँ तो एक बार में नहीं समझ सकता हूँ. Please comment करिए. Let me know if you have not understood. I would surely try to explain in a different video, seeing your comments out, right? And if you have liked till the way I am teaching, make sure you're subscribing to the channel because I keep on uploading video which you can go through. The content is free on my channel. So please subscribe, like it out if you really like it, right? Going ahead, coming back to what I was teaching, let me explain find the remainder. To the question, find the remainder जो हमें दिख रहा है यहाँ पे. Coming back to this question, अब इसको कैसे solve करेंगे, that is very important to understand and learn, right? यहाँ पे क्या दिया गया है, find the remainder when the polynomial is given to you as this, right? एक polynomial हमें दे दिया गया है, इसका डिग्री 1 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है. कितना है डिग्री? 3, because the highest exponent is 3. एंड हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं g ऑफ x के साथ, विच इज नथिंग बट x प्लस 3. तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज बेसिक थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 0 while going ahead. No, solve it as 0. तो x का वैल्यू बेसिकली अल्फा, यहाँ पे हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था अल्फा एक ऐसा रियल नंबर है जब पॉलिनोमियल को हम x माइनस अल्फा से बेसिकली डिवाइड करते हैं, तब P of alpha would becomes the remainder. That is what the remainder theorem stated, right? So logically speaking, यहाँ ये जो x का वैल्यू जो है या अल्फा का वैल्यू would be -3. अच्छे से समझिए. Many students do not know. They just know कि हाँ जीरो के साथ इक्वेट करना है. बट क्यों करना है? क्योंकि मैंने सिखाया जब हम एक पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तभी अल्फा माइनस अल्फा जाके जीरो होता है, तभी वो प्रूफ बनता है. तो यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू है ना वो 3 नहीं है, वो -3 है, तभी जाके ये x ऑफ -3 बनेगा. तो द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर इज -3 एंड नॉट 3. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -3 टू गेट द रिमाइंडर. सो सिंपली सॉल्विंग इट, -3 क्यूब -3 times -3 square plus 4 times -3 plus 50, right? So on solving you would be getting the answer to the same. I am just solving it here because थोड़ा clumsy हो गया है. -27 -3 times 9, right? And going ahead this would be -12 and basically plus 50. So when you solve this out, you would be getting -27 -27 -12 plus 50. So on solving further, what will I get? What would be the value of this? This would be nothing but -54 and -12. -54 and -12 would be -66 plus 50. So -16 is your आंसर. सो इस क्वेश्चन के लिए अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो आंसर क्या है? -16. क्लियर? सो वेरी बेसिक रिमाइंडर थ्योरम. अगेन आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफिंग अबाउट दिस. बहुत बेसिक है. अगर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, then what happens when I divide it with a real number जो अल्फा है, basically when I divide it with x minus अल्फा, जहां पे अल्फा एक रियल नंबर है, तब जो रिमाइंडर होता है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो p ऑफ अल्फा. x माइनस अल्फा से डिवाइड करूंगा तब. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने प्लस इसलिए लिया टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट +3, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज -3, and accordingly while substituting the value you would be getting the answer for the same.
सिमिलरली यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं विच वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो. पी ऑफ एक्स हमें दिया गया है. पी ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, राइट? व्हेन दिस इज गिवन एंड वी हैव बीन गिवन जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x. तो अगेन 2 - 3x फॉर्म में नहीं था. जो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है वो x माइनस अल्फा फॉर्म में ही होता है. तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप इसको सबसे पहले जीरो के साथ इक्वेट करिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका अल्फा का वैल्यू है. एज सिंपल एज दैट. सो दिस वुड सिंपली कम एज 2/3 ऑन सॉल्व. तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो मैं x - 2/3 से डिवाइड कर रहा हूँ एक्सप्रेशन को. That's it. That is what I am doing. Right? So going ahead, मैं जो अल्फा का वैल्यू है यही आपका अल्फा का वैल्यू होगा. आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, p ऑफ x में. तो p ऑफ 2/3 you would be calculating, which would be 2/3 whole times 3 minus 2/3 plus 1. तो मेरे को दिख रहा है कि this would not be equal to 0. This would give me 8/27 minus 2/3 plus 1. So 27 LCM हो जाएगा 8 minus 18 plus 27. So on solving you would be getting an answer which would be basically जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 17/27 I guess would be the answer to this if I'm not wrong. 8/27 2/3 plus 1 normal calculation है. 9 times 2 would be giving me 18, yeah, and plus this would be 27. Absolutely right. So 8 minus 18 would be minus 10 plus 27. So 27 minus 10. So 17/27, which surely is not equal to 0. क्योंकि ये 0 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि जो p ऑफ x है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ g ऑफ x. लॉज क्यों? बेसिक सा बात है, जब कोई भी चीज एक किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है then what happens, we do not get a remainder needs to be 0 then. Since I am getting a remainder here, surely it is not a multiple. So this is the idea behind solving this question, right? There was a technical glitch while making the video, so I hope you can understand the video. I tried to edit it out जो भी mistake हुआ था as in with the glitch. Please comment if you have any doubts. If you like my way of teaching, please like the video. And the content, as I've always stated, is free on my channel. Go through the content. कोई भी doubts है comment करिए. So that is it for lecture 4. I have completed many other topics on polynomials. Go through all the videos to clear your doubts out. And let me know how can I help you further as well. Thank you so much for watching all the content throughout the content of this video. And that is it for the lecture. Thank you so much.